Assalamu alaikum students, welcome to this course. Today we are going to discuss the first topic of first chapter, and that is Introduction to Biology. First of all, I'll tell you what is science. Science is the study in which we try to understand the principles of nature. हमारी nature में, हमारी surroundings में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हम science में study करते हैं. And how we do that, first of all, observations are made by using our five senses and then experiments are done. ठीक है, हम observe करते हैं, उसके बाद उन observations से जो हमें information मिलती है उस पे हम experiments करते हैं and logical conclusions are drawn. ठीक है, उन experiments से हम result निकालते हैं so that we understand the principles of nature. So this is how we'll define science, the study in which observations are made, experiments are done, logical conclusions are drawn to understand the principles of nature. So in ancient times, scientific information was limited, so there was no further classification of science. But with the passage of time, as scientific knowledge increased many folds, so scientists divided this scientific knowledge into a number of different branches like biology, physics, chemistry, maths, and there are so many other branches of science, right? Here we'll discuss biology. Biology is defined as the scientific study of life for living organisms. This life word is for living organisms. Biology is actually derived from two Greek words. Bio is derived from bios, meaning life, and logi is derived from logos, thought or reasoning or study. So this is the study of life. Biology is the study of life, living organisms. And the study of living organisms is very important for us as it provides us information of our problems, human problems, and remedies to our problems as well. The problems like related to health, food, environment, and the problems as well as their solutions. So this is really important for human beings. Now biology is further divided into a number of divisions and branches because it is a very vast field and it is divided into so many branches. And the three major divisions of biology are zoology, botany, and microbiology. In zoology we study animals. The study of animals is called zoology. The study of plants is called botany, and microbiology is the study of microorganisms. So ये तीन major groups हैं living organisms के, animals, plants and microorganisms, और इनको हम तीन major divisions में study करते हैं. But these divisions are further divided into many sub branches, and here we are going to discuss them briefly. So here are the further branches of biology. First of all, molecular biology, which is also called as biochemistry. The name indicates molecular biology, the study of molecules of life, right? So the study of molecules of life is called molecular biology, and the molecules of life include water, proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, DNA and RNA, right? So these are the molecules of life, the molecules present in living organisms, and the study of these molecules is molecular biology. Then comes morphology. Morph means form and structure. So the study of forms and structures of living organisms is morphology. Majorly in morphology we discuss the external structures. Externally हम living organisms का comparatively उनका size, shape, pattern, color ये हम discuss करते हैं morphology में. उनकी different organisms में differences क्या हैं, similarities क्या हैं, उनके structure में, उनके shape में, उनके size में. So ये हम morphology में study करते हैं, and majorly external structures, right? And another branch is anatomy. Anatomy is the study of internal structures. Anatomy is a Greek word which means to cut open, and so to cut open and study the internal structures, right? So in anatomy we study the internal structures. Anatomy is also called as internal morphology because we are studying structures but externally in morphology, and internal structures like bones and even cells and tissues and organs, they are studied in anatomy, right?
Then comes histology. Histology is the study of tissues. Tissues are actually the group of similar cells which are specialized to perform a similar function. For example, muscle tissues. आपको पता है muscle tissues movement में help करते हैं, ठीक है? So these muscle tissues are composed of similar types of cells, right? So the study of these tissues, and there are different kinds of tissues in plants and animals, and they are all studied in histology. Then comes cell biology. Cell biology is the study of structure and functions of cells. As the name indicates, cells and cell organelles. Cell organelles are the components of the cell, and the cells and their cell organelles are studied in cell biology. Cell division is also studied in cell biology. Then comes physiology. Physiology is the study of functions of different parts. And you must not be confused here. Morphology and anatomy is the study of structures, and physiology is the study of functions of different parts of living organisms. So morphology में जिन structures को हम study करते हैं, whether external or internal, उन parts के functions को हम physiology में study करेंगे. Then comes genetics. Genetics is the study of genes and their role in inheritance. So first of all, you should know what are genes. Genes are actually small parts of DNA, and they determine each and every character of living organism. ठीक है? Living organism का जो भी character है, किसी भी plant ले लें या animal ले लें, size, उसकी shape, for example living beings में हमारा complexion, eye color, hair color, and each and every character is determined by the genes, right? And their role in inheritance. Inheritance is actually the transfer of characters from parents to offspring. We resemble our parents, and every living organism will give birth to an offspring of its own kind. For example, अगर एक cat है तो it will give birth to a cat, a dog will give birth to a dog. So जो characters offspring में आ रहे हैं वो parents के ही characters transfer हो रहे हैं. So this is inheritance, right? कुछ diseases हैं even जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, और हम लोग आपस में कहते हैं ना कि कोई भी हमारा सिबलिंग है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक बच्चा जो होता है हम कहते हैं ये अपनी मम्मा पे गया, अपने पापा पे गया. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रिजेम्बलेंस ऑफ चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स. So it is actually due to inheritance, and genes have a very crucial role in inheritance, and this is what we all study in genetics. And then embryology. Embryology is the study of development of an embryo. So what is embryo? First of all, you should know what is embryo. In simple words, we can say embryo is an unborn child. यानी birth से पहले there are a number of developmental stages, ठीक है, और उस stage में individual को embryo कहा जाता है, right? और after passing through these developmental stages, a child is born, right? So वो developmental stages जो हमारी नज़र के सामने नहीं हो रहे हैं, ठीक है, we are seeing for example a newborn baby, a chick hatches from the egg. अब egg के अंदर वो क्या changes आई, ठीक है, कि वो egg था और वो एक chick बन गया when it hatches out of it. So वो सारी जो process है वो development में आती है, ठीक है, और development को हम study करते हैं embryology में, क्योंकि उस stage में उस offspring को, उस individual को embryo कहा जाता है. बिफोर बर्थ, एन अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, जिसके भी बर्थ नहीं हुई, बर्थ से पहले उसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, और वो सारा प्रोसेस हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ न्यू बेबी इज बोर्न, वी कैन सी इट्स हैंड्स, लेग्स. एक्सटर्नली हम ये सब कुछ देख सकते हैं, उसकी आईज हैं, ईयर्स हैं, सब कुछ प्रॉपरली बना हुआ है. उसके इंटरनल सारे ऑर्गन्स, उसका हार्ट, लंग, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज डेवलप्ड, ठीक है. तो वो सारी डेवलपमेंट कैसे हुई, कब हुई, जाइगोट से लेकर न्यू बॉर्न बेबी तक जो चेंजेस उसके अंदर आए वो सब हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे. देन कम्स टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इज नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेराइटी है, और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हैं. तो बहुत ज़्यादा वेराइटी है, और उनको ईच एंड एवरी इंडिविजुअली हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते. इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है. तो जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स
सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अब हम जब ग्रुप को स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली हमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाएगा जो उस ग्रुप में होंगे, तो हमें इंडिविजुअली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्रुपिंग इसलिए की गई है, क्लासिफाई किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और नेमिंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है, और दिस इज ऑल स्टडीड इन टेक्सोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स बड़ा कॉमन सी एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट हियर, अदरवाइज आप ये आगे चैप्टर्स में जब जाएंगे तो हम टेक्सोनॉमी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स को होमोसेपियंस कहा जाता है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, तो बायोलॉजी ने एक स्पेसिफिक नेम्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए, तो इससे ये सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and the classification on the basis of similarities and differences into groups and subgroups is called taxonomy. Then comes paleontology, the study of fossils. Fossils are the dead remains of plants and animals, and those plants and animals which lived millions of years ago, बहुत साल पहले ancient times में जो animals रहते थे, when they died, उनके remains हमें आज मिलते हैं ज़मीन से, और हम निकालते हैं। जब हम फॉर एग्जाम्पल डायनासोर का, हमें कैसे पता कि डायनासोर सम टाइम इन पास्ट दे एग्जिस्टेड, तो हमें कैसे पता, उनके फॉसिल्स से, उनके रिमेन्स, हमें उनकी बोन्स मिली, उनके जो भी स्ट्रक्चर, पूरा स्केलेटन ऑब्वियसली डिफरेंट रीजन्स में से हमें मिला, और हमें पता लगाया कि एंशिएंट में कोई ऐसे एनिमल्स थे जिनका इतना साइज था उनका, दे वर सो ह्यूज एंड बिग, ठीक है। सो ये फॉसिल्स से हमें पता चलता है। सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलेंटोलॉजी। सो प्लांट फॉसिल्स भी होते हैं, एनिमल फॉसिल्स भी होते हैं, those plants and animals which lived millions of years ago and now they are extinct, अब वो नहीं रहते, सिर्फ हम उनके dead remains से स्टडी करते हैं पास्ट में कैसे एनिमल्स और प्लांट्स थे। Then environmental biology, the name indicates the study of environment actually, ठीक है, environment और life, living organisms का interaction. So the study of interaction between organisms, obviously living organisms, and their environment. This is very important to study the interaction between living organisms and their environment, क्योंकि living organisms जो हैं they are affected by their environment, अपनी surrounding से they are affected. उसमें दूसरे living organisms भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, लाइक एयर, सॉइल, रेनफॉल कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, उनका हैबिटेट क्या है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। और सो ये सारा इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट से हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन कम्स सोशियो बायोलॉजी, द नेम इंडिकेट्स द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें हम एनिमल्स अपनी सोसाइटीज़ में कैसे बिहेव करते हैं, ये हम सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। वो ग्रुप्स के फॉर्म में रहते हैं, उनके एनिमीज कौन से और किस तरह से वो बिहेव करते हैं। Then parasitology. The name indicates the study of parasites is called parasitology. Parasites are actually the living organisms which live on other living organisms, ठीक है। वो दूसरे living organisms में रहते हैं और जिसमें वो रहते हैं उसे host कहा जाता है, और अपने host में रहते हुए वो वहाँ से food भी लेते हैं, shelter भी लेते हैं, उनको जगह मिलती है रहने की, but they harm their host, ठीक है। वो उसमें diseases cause करते हैं, right? सो एनिमल पैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बहुत सारे वॉर्म्स ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहाँ इंटेस्टाइन से वो ब्लड भी सक करते हैं, ठीक है, उनको शेल्टर भी मिली हुई है, बट दे कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। देन कम्स बायोटेक्नोलॉजी,